All right. Okay. Oh dear. Now another question there. Ay. Yeah, it says, hi. When I watch too much news and Facebook, I get upset and depressed. हाँ Can you हाँ tell me how to strike a balance between knowing about the world and meditation? This is from हाँ. Amy. This is very true, and I'll be very honest with you, this happens with me as well. Because इतने dismal news है आजकल हमारे उसमें, और वही वाली बात है कि we also want to know that what's happening in the world. But what's happening is, few years ago we used to sit down at 9 o'clock or at 8 o'clock, and we used to watch the news, Yeah, and we still used to be knowing what's happening in the world. जबकि जब जिस जमाने में ये आईफोन्स नहीं थे, ठीक है ना, बिल्कुल जी. जब से ये फोन आ गए हैं, मुझे लगता है वी ऑल ऑन एवरेज हम दिन में 700 टाइम्स फोन खोलते हैं और स्क्रॉल करते हैं. सिर्फ. दिस इज एन एवरेज. मुझे लगता है मैं तो ज्यादा ही करती हूँ. करती होंगी. लेकिन हाँ, तो आई थिंक प्रोबेबली saying to yourself कि मैंने दिन में, this is 9 o'clock is the time to watch my news, and the rest of the day I'm not going to touch my phone. Yeah. I'm not going to look at the news. But we are still doing Well, we it. So can't resist, really, can we? हाँ हाँ, you're absolutely right. You're absolutely right. But थोड़ा सा अगर if it is so much bothering you, or it is affecting your mental health, then this is the time to step up and make a routine for yourself that and the one way can be that don't keep the phone in the room you're sitting. This works for me. मैंने खुद कोशिश की है, मैंने खुद ट्राई किया. मैं उसको किचन में रख देती हूँ, मैं दूसरे कमरे में रख देती हूँ, ताकि when I'm in that room, then मुझे फोन मेरे आसपास ना. जब सामने पड़ा था तो बंदा वैसे ही बाय द वे खोल के ऐसे एक दफा चेक कर लेता है, देख लेता है. सो इट शुड बी आउट ऑफ योर साइट, नंबर 1. नंबर 2, यू हैव टू डेजिग्नेट अ टाइम टेबल. यू हैव टू से टू योरसेल्फ कि नहीं, ये मेरे टाइमिंग्स हैं. अगर वाकई में you're interested in your news, you can watch the 7 o'clock or the 9 o'clock news, and you will come to know what's happening in the world. और या फिर even if you want to look up the phone, you can just say to yourself कि ये मेरे टाइमिंग्स हैं, मैं इसमें करूंगा. Third thing is, one thing which I really want to stress on is कि please bed time और phone में gap रखें. All right, okay. This is एक तो इसमें से जो लाइट निकलती है, that can disrupt our sleep pattern as well. ठीक है ना. स्पेसिफिक लाइट का नाम ऐसे मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन एक तो ये हो गया. एक उस वक्त जब आप रात को सोने से पहले इस किस्म की चीजें देखते हैं, तो वी डोंट वांट यू टू बी स्लीपिंग सैड एंड डिप्रेस्ड. सो आई थिंक few hours. I understand what you're saying. Like, a lot of people find phone as a companion, as a friend, really, as well. And, they want to be, because they may not have anyone else to talk to or speak बिल्कुल to. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तमरेज, you've got it right. But then we have to choose what we are doing it on phone. यानी कि मैं तो ये भी कहूंगी कि join a group. जैसे अगर हम loneliness की बात करें तो join a Facebook group. कितने ही Facebook groups हैं आजकल. तो इतनी चीजें हैं, फेसबुक है, टिकटॉक्स है, to keep you busy. What I'm saying is that you not necessarily have to watch the dismal and down videos. You can choose what you're watching as well. So Yes, absolutely, Tamrez, if you think that this is something which is your companion and you want to use it, then you can also choose, because हम खुद choose करते हैं हम जो watch कर रहे हैं. Yeah, true. So we choose the right things as well. मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ, अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि मेरा अपना जो फेसबुक ग्रुप है, मैं उन सबको उस पर कहती हूँ कि रात को सोने से पहले इधर जरूर आया करो, देखा करो कि क्या किस तरह से खाना है, एंड थोड़ी सी गपशप भी लगा लिया करो, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाए. Okay, now then Raja Tariq Saab is coming back, and with another question. पूछेंगे, can the logic of loneliness and being alone make one feel safe? I don't know. I don't know this answer. तारिक साहब, आपके बड़े टेक्निकल किस्म के क्वेश्चन है. बेशक probably a psychologist would be able to answer it, not a dietitian. But the thing is कि मुझे अब समझ आ रही है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं. तो जिन लोगों को ये होता है, वो फील करते हैं कि वो एक बलून में आ गए हैं. उनको ना किसी से बात करनी है, अब उनको ना किसी से कम्युनिकेट करना है, तो उसी में खुश रहते हैं कि बस अच्छा है, मेरी जान छूटी, मैं इस बबल में ही रहना पसंद करता हूँ. लेकिन वही वाली बात है, कब तक you're happy in that bubble. And I can totally associate with that sometimes मुझे अगर कोई घर में बंद कर दे ना 1 महीना, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा. I'll be happy.
मुझे किसी से बात करनी है तो यू आर राइट कि इट गिव्स अस दैट सेंस ऑफ यू नो कि बस सिक्योर हूं, किसी से बात नहीं करनी, किसी से कम्युनिकेट नहीं करना. लेकिन वी हैव टू सी कि लेटर ऑन इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपके मेंटल हेल्थ पे. Okay, I've got Amara, and she's asking, can you tell me how to deal with old parents who feel lonely and are withdrawn from the world, especially single parents? हाँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो इट डिपेंड्स वेदर अब वो सिंगल पेरेंट्स आपके पास रह रहे हैं. अगर आपके पास नहीं रह रहे फिर तो और भी मुश्किल है. अगर आपके पास नहीं रह रहे, द थिंग इज कि वी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि उनका कोई फ्रेंड ग्रुप जरूर हो, उनकी एज के कोई लोग हों कि आप उनको कम्युनिकेशन करा सके, उनकी आपस में गपशप करवा सके. एंड यू नो द थिंग इज यू हैव टू कीप इन टच विद देम. यू हैव टू से टू देम, अगर तो आपके पास नहीं रह रहे तो कि हफ्ते में एक दफा या 2 दफा. एंड आई नो दैट इज नॉट इनफ, लेकिन हम लोग की भी जॉब्स हैं, हम लोग की भी बिजी लाइव्स हैं. मैं तो एग्जांपल दूंगी कि मेरे फादर, ही इज नॉट, अब तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन व्हेन माय फादर वाज अलाइव उनको हमने ये फोन चलाना सिखा दिया था. एंड वी आल्सो गॉट हिम अ लैपटॉप, और हमने उसको कहा था लैपटॉप में ही यूज्ड टू लाइक टू राइट, तो हमने उसका कि वर्ड का पेज खोल दो और वर्ड पे अपनी टाइपिंग, तो आहिस्ता आहिस्ता टक 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 वो टाइपिंग करते थे. एंड यू नो ही यूज्ड टू कीप हिमसेल्फ बिजी. सो आई थिंक आज के जमाने में टेक्नोलॉजी आ गई. थोड़ा सा अगर हम अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में भी हैं तो क्या हुआ, वो उनको भी हम सिखा सकते हैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ. थोड़ा मेक श्योर दैट दे हैव सम फ्रेंड ग्रुप एंड मेकिंग श्योर दैट यू आर मीटिंग देम क्वाइट ऑफन. you're सेंडिंग देम मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, पूछ लिया, उनको कोई फॉरवर्ड भेज दिया, ये वीडियो देख लो, ये कर लो. This is the most we can do for our parents, but I know it is not easy. It is very hard. Okay, I've got Kabir Saab here, and he's saying, does steroids make you lonely? This carries on. He says, steroids make me feel lonely. I go restraints on my own, but I can't come off them. It is very, very hard, he says. आई एम नॉट श्योर बिकॉज स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, this can be mental health, or it can be one side effect as well. But obviously if you've got a certain health condition and you can't get off your steroids, then you have to carry on doing it. Then you have to think of other ways to keep yourself busy and to overcome this feeling of loneliness. But it really depends on person to person. Different people will react differently to steroids. So it could be that you're that person जो इसके साथ हो रहा हो, तो उनसे मैं यही कहूँ कि जिस तरह से मैंने कहा, आपको कोई गार्डनिंग करें, कोई सोशल वर्क करें, कोई वॉलंटियरिंग करें, अपने आपको बिजी करने की कोशिश करें, ताकि अपने आप को फुल चांस दे सकें आप. Oh, Kabir is coming back to me. He says he uses steroids for muscle growth. अच्छा, मसल ग्रोथ. हाँ, तो वही वाली बात है कि आपका ऐसा हेल्थ कंडीशन कि हम ये भी नहीं कह सकते कि स्टेरॉइड्स ना लें. मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं और उसकी वजह से वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड वेट गेन की वजह से वो डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं. सो everyone has a different journey. तो आपके साथ अगर हो रहा है, I totally understand, but this is something which we can't say to you that you stop having it. But वही वाली बात है, you have to cope with it, and that's why I'm here. So giving you ideas कि आप पिकनिक पे जाएं, lessons ले, गार्डनिंग करें, फूड बैंक में हेल्प करें, वॉलंटियर करें, कोर्सेज करें. फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका अगर मसल का प्रॉब्लम है, मैं तो आपसे कहूँ कि आप जरूर, जिस तरह से कि मैंने कहा कि 30 मिनट्स की एक्टिविटी करें. आप यू स्टार्ट गोइंग फॉर अ वॉक, स्टार्ट गोइंग टेकिंग अ सर्टेन स्ट्रोल, किसी ना किसी की एक्टिविटी, गार्डनिंग करना शुरू करें, साइकिलिंग करना शुरू करें, ताकि आपके मसल्स और सब कुछ स्टिम्युलेट भी होने शुरू हो जाए. Okay, I've got Amara coming back here. He's saying, asking Fareeha Jay ki, I am taking hormone replacement therapy. I feel brain fog and empty from inside due to early menopause. Can medicine HV this impact? HRT जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, आई एम नॉट श्योर कि आपने कब से स्टार्ट की है, लेकिन इट शुड, आई थिंक, बिकॉज वही वाली बात है कि आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स डाउन होने शुरू हो गए हैं. एंड व्हेन यू आर हैविंग दिस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इट शुड, यू नो, असल में तो हम ये सब, जब हम औरतें पेरीमेनोपॉज में जाते हैं तो हमारा ब्रेन, और मेनोपॉज में जाते हैं तो हमें ब्रेन फॉग भी होता है, हमें डिप्रेशन भी होती है, हमें फीलिंग ऑफ सैडनेस भी होती है. आप सुबह उठेंगे और आप उदास उठेंगे, और किसी का तो इतना ज्यादा होता है कि सुइसाइडल थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं. इस हद तक ये मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज औरतों बेचारियों को अफेक्ट
करता है. लेकिन saying that if you have started HRT, I think things should start changing very soon. I think it should work for you. If even then it is not working for you, please see your GP and discuss this with your GP कि ये मेरा मसला है. Okay, I hope that is okay for you. And now then मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ और ये कह रही है कि we haven't got that long to go. Can you please, Fareeha Ji, tell us you know, how this loneliness, how widely is it sort of recognized in the society, and how should we really feel in इसके बारे में? अच्छा, जैसे अगर आप लोनलीनेस की बात करते हैं तो 13% of the people in the UK at present are feeling lonely. 13. 13%, इतनी इसकी percentage high. And वही वाली बात है कि it is not about being alone. It is a feeling from within. तो it can, you know, वही वाली बात है कि life events हो सकते हैं. There can be many circumstances which make it happen. So this is there. वही वाली बात है कि ये weeks इसीलिए होते हैं कि हम awareness create कर सकें. हो सकता है कि ऐसा कोई बंदा हो जो कि आज हमें सुन रहा हो, या हो सकता है कि हम जब ये वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं देख रहे हैं जो कि अभी लोनली हो लेकिन उनमें थोड़ी सी हिम्मत पैदा हो कि चलो ठीक है, अभी तक तो मैंने कोशिश नहीं की थी, चलो मैं कोशिश करती हूँ वॉलंटरी काम करने की, चलो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब से चलो थोड़ी सी वॉक पे चली जाया करूंगी. तो ये वीक्स इसीलिए हम करते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ी सी लोगों की हिम्मत बढ़ा सके और हम लोगों को अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर सके. Oh, that's nice. Thank you very much. Anything else you would like to tell us to do to keep away from I don't want. Yeah, the only thing I would say is that please don't suffer in silence. If you feel, जैसे कि वो एक साहब ने कहा, मुझे उनका नाम भूल गया, कि वो तो खुश हैं भाई लोनलीनेस में क्योंकि वो एक बबल में है. लेकिन if you think that you are, you know, there are so many helplines. Mind है, British Red Cross भी कर रहा है, Samaritans है, एज वाले करें जो कि for older people है, Silver Line है, Mind एक charity है. So मैं उनकी helplines हैं. So if you think that you're not able to communicate with anyone, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है, तो प्लीज इनको कांटेक्ट करें, इनके फोन लाइंस पे जाएं. the important thing here to remember is that please don't suffer in silence. Okay, Kabir, you coming back to me, and I would advise you as well, okay, please try to seek some help. He says, I'm 24 and I've always been single and I feel very lonely. हाँ हाँ, so यही वाली बात है कि seek help, never suffer in silence. I know it is hard जब हम NHS का सोचते हैं, उन पे अभी ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चैरिटीज काम कर रही हैं जिनके मैंने अभी बहुत सारे यंग माइंड है, एक माइंड वालों का एक और है, जैसे यूर वेरी यंग, यूर ओनली 25, सो आप यंग माइंड को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्पलाइन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो द मैसेज एट द एंड विल बी जस्ट डोंट सफर इन साइलेंस. Okay, I've got Ryan here and just asking, is a bit confused. I don't know what we said actually. High fat or low fat diet for gut health? For good health, high fat for or good low? Health is that, yeah. Acha. So high fat or low fat. The thing is, at the end of the day, we also need fats in our body, ठीक है ना? Because fats help us absorb vitamin A, D, E, and K. फैट्स हमारे कुछ फैट्स हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है कि हम बहुत ज्यादा खा जाते हैं. तो बहुत कम भी नहीं खाने, बहुत ज्यादा भी नहीं खाने. यू फॉर योर गुड हेल्थ यू हैव टू थिंक ऑफ 3 things. How much fats you're having, ठीक है, how often you're having them, and the type of fats. So when we talk about the type of fats, you're thinking about the healthy fats, यानी कि आपके monounsaturated fats हैं, यानी कि आपके nuts हो गए, seeds हो गए, olive oil हो गया, rapeseed oil हो गया, sunflower oil हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि आपके फिश है, ये सब आपके हेल्थी फैट्स हैं. तो हम अनहेल्थी फैट्स की बात करते हैं तो हम बटर की बात करते हैं, हम घी की बात करते हैं, और हम वो जो आपका जो व्हाइट आपको फैट नजर आता है मीट के ऊपर, जो चर्बी नजर आती है, वो आपका सैचुरेटेड फैट है, तो उसको आपने कम करना है. मैं आपसे कहूंगी आप दालों का इस्तेमाल ज्यादा करें, लीन मीट का इस्तेमाल करें ताकि आपको इतना फैट खाने को ना मिले, आप वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल करें ताकि आप घी का इस्तेमाल करें. सो दीज आर द हेल्थी फैट्स. साथ साथ अपने अमाउंट का भी ख्याल रखें कि आप बहुत ज्यादा बिग अमाउंट्स में नहीं खा रहे. तो कम और ज्यादा का सवाल नहीं है, जस्ट बीइंग इन मॉडरेशन एंड थिंकिंग अबाउट द टाइप ऑफ फैट्स यू आर हैविंग. Okay. Oh, now then, sorry. Another question here. I've got loads of questions here. I think I'm going to have to leave them till next time, really. How to come to terms with a traumatic childhood in your 50s? This is from Subhan.
this is very difficult, and this is very technical, and you really need to seek help for that. If you are going through a lot of trauma, I think it is time for you कि अब आपको feel हो रहा है, तो you need to get in touch with any of these charities, या अपने GP से बात करें ताकि वो आपको referral दे. You can, the thing is, someone, अगर हम loneliness की बात करते हैं तो अपनी GP से social prescription service के लिए भी आप you can ask them for that. But otherwise मैं इसमें one to one ऐसी कोई advice नहीं दे सकूंगी. It is something which you really need to seek help for. Okay, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरिया जी. And yes, so I'm going to keep these questions. But you joining us again on Mashallah this Wednesday. And Inshallah. अगर याद रही तो. Inshallah, but that topic is on dementia, isn't it? Dementia, बिल्कुल, याद I think that's the यादाश्त पे है ना. मैं कि यादाश्त dementia, I suppose same thing. लेकिन it's a condition, Alzheimer's का, dementia का, ये हम इस पे बात करना चाहेंगे specifically with South Asian communities. हम इस पे टॉपिक पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है हमारी कम्युनिटीज में, तो हम इस पे बात करेंगे और ये क्यों होता है और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर किसी को हो भी जाता है तो हम उसको हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम उसको सपोर्ट एक्सटेंड कर सकें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Inshallah, we shall see you on Wednesday afternoon. Thank you for having me. I hope I was of some help. MashaAllah, you've been really, really good. Thank you very much. Aisha ji coming and saying thank you. Mia Akram Saab. There's loads of people here just saying thank you very much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया for having me. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz ji. Allah Hafiz.